नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के विजन ऑफ एशिया में हम आप तक पहुंचाएंगे एक रिपोर्ट फूड पेंट्री एडिसन की। इसके अलावा आप देखेंगे झलकियां उस कार्यक्रम की जिसका आयोजन हुआ ऑनलाइन सदाबहार देव आनंद के जन्मदिन को मनाने के लिए। आपको हम लिए चलेंगे ओमिया धाम में, जहां गणेश उत्सव की कुछ झांकियां आप देखेंगे। साथ ही लेकविल रोड पर स्थित वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में पुरुषोत्तम मास के एक मनोरथ के दर्शन के साथ साथ कुछ अंश उस श्रद्धांजलि सभा का जिसमें याद किया गया पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अरविंद शाह को। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम में हम आपके साथ अपनी ओर से वो कटिबद्धता याद करना चाहते हैं जो हमें इस संसार को, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए संस्कारों से मिली है। मनुष्य मनुष्य की सेवा करे, उसका ध्यान धरे। इस दिशा में फूड पेंट्री एडिसन विशेष रूप से उन लोगों की सेवा में आगे आया है जो कोविड-19 के चलते ठीक ढंग से अपना खाना अपने आप जुटाने में समर्थ नहीं है। हर शनिवार और रविवार को ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में ये आयोजन किस समय होता है और क्या कुछ आशाएं इस कार्यक्रम से जागी हैं, उसके बारे में प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। Thanks to everybody for being here today, and I want to thank everybody who came out today to make their donations for the food pantries in our county. During the Great Recession, I've been volunteering for a food pantry over 20 years, and our numbers would go from 150 to 250 families coming out for food twice a month. Now that this COVID-19 has started, our numbers have doubled. It's amazing how many people are in need of food, and I just want to thank everybody for putting this together, to make sure that people have food to eat, because this is a really bad time that we're going through. We can only hope that it ends soon and we could get back to some sort of normalcy and get people back to work, because it's very difficult out there. Yeah, I really like what everybody's doing, and this reminds me of, I thank everyone for coming out and everyone that participates. The reason why I don't call off names because I don't want to leave anybody out that does great work at all. And this is the thing, because I was in the store yesterday and an older woman was in front of me, and she didn't have enough money for her grocery. And she was like that. So, I helped her out back and forth, but this is the kind of stuff that hurts my heart. It hurts my heart that when people don't have enough, that we're going through such hard times right now, and that I like the fact that everybody here is pitching in and doing the best that they can to help Edison. Thank you. Hello, ITV. Thanks for showcasing this today, and thanks to you all for coming out today. It's a wonderful event that every single week, and not just every week, several times a week, we come together and we participate in the food pantry. Just hearing the words of my fellow colleagues and what they said, we can't take certain things for granted. The reality is that this is a hard time for most of America right now. And if you have the ability to contribute, please know that we're available right here. You can contribute, and don't take anything for granted. This is part of the process of building a community, and that's what we're doing. We're showcasing that we are a community. We're helping each other out, and we're here for everyone that needs it. So thank you all for hosting this. Thank you very much, and again, thank you to all the volunteers here today to donate food and collect the food. This is a great community event, and on behalf of the Board of Education and our school community as a whole, which you also have helped out greatly, all of you here, we appreciate all the help our community is getting, and we really love the support that the community has come together to work together to provide food for the needy. Thank you very much. I would like to thank everybody here, right from the county presentation, Board of Education, township presentation, Nilesh Dasondi, our leader from United Rishabh, and everybody here is coming together to help the community, because this is getting worse day by day, and this pandemic has already caused 36 million people in America jobless. 36 million people have filed for the unemployment, and it's not stopping. So this community at least is trying. I heard Joyce saying
somebody didn't have money to buy grocery. So Charles Tamaro, our leader, has started this initiative. We are going to give all this to his association, Hands for Hope, and we have to be part of this community to serve the community when they need the most. So all these big officials said that this is a really need of the community. There are a lot of needy, poor, homeless people in our area, Middlesex County, and Charlie, Joyce Ship, and Sam Joshi, Pandya Foundation, Ralph, they are doing a great job. I have my team, Biral Patel, Parul Amin, Raja Raman, Akhil Malhotra, everybody, Subbu doing a great job coming here, collecting the food and giving it to all the... And we are in an unprecedented situation where this has not even occurred during the Spanish flu or the Great Depression, right? We are in a very, very, very worse situation, and a lot of things, bad things are happening because many people are going hungry, right? Or we only see what we are seeing, but we don't see what's happening behind. And yesterday when I was watching TV, I was in tears because, people do things because they get hungry. As long as you take care of their food needs, I'm pretty sure, we will have a peaceful, happy United States of America. God bless America. God bless Edison. Thank you. Anu, I'm so glad to be here and donate some food and help if needed. I would encourage everyone to come and donate something. Each family donates at least 1 or 2 cans. It's a great help for the people who are in need. I'm glad to help here with our Edison Food Bank, and now maybe it's week 6 or 7, and then we're going to continue this thanks to our community efforts with Nilesh and Pandya Foundation, Dr. Raj Pandya. Thank you for our whole community for coming together and continuing these efforts. I see people every week who can't put a meal on the table, and this is the time to help. If someone doesn't have a mask, someone doesn't have a meal, just talk to your neighbors, talk to anyone. When you go grocery shopping or getting something from the convenience store, just speak out and help one another. This is the time to do it. This is going to be an ongoing effort. Gold, thank you Raja Bhatti, thank you Dr. Sudhir Parikh, for covering this event. And we have been doing this from last 3 weeks. This is our 3rd week, and we are going to continue for a few more weeks till the need is there for the community. And please come and donate the food. Please spread the word. And Charlie can collect all the food. Thank you. देवानंद का जन्म 1923 में हुआ था। इस सितंबर को उनका 97वां जन्मदिन मनाया जाता न कहकर ये कहना चाहिए कि उनके प्रशंसकों ने उनके जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाया। उनकी रचनात्मकता के साथ इस उत्सव का ऑनलाइन आयोजन करने का श्रेय जिस संगठन को जाता है, उनका नाम है हैपनिंग सांस्कृतिक फाउंडेशन एंड एनलाइटन इंडिया USA मीडिया हाउस। देवानंद की फिल्म के गीतों के साथ साथ उनके फिल्म जीवन की यात्रा की झांकियां भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई और साथ ही कई मुख्य अतिथियों ने अपने विचार देवानंद के बारे में बांटे, जिनमें ITV गोल्ड और पारिक वर्ल्ड वाइड मीडिया के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक भी थे। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम के रिपोर्ट का ये पहला अंश। पूरे 60 वर्षों तक उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, भारती का नाम देश विदेश में रोशन किया। ऐसे सुपरस्टार देवानंद साहब को आज हम याद करने के लिए आपसे मुखातिब हुए हैं। खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में जारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चाँद। और पूरे 6 दशकों तक काम करते रहे फिल्म एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के विभिन्न रूपों में। जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। 50 के दशक में टैक्सी ड्राइवर, 9211, काला पानी, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट जैसी फिल्में आई और 1952 में फिल्म बाजी के हिट हो जाने के बाद नवकेतन फिल्म्स के साथ एक लंबी साझेदारी शुरू हुई। अपना दिल न जाने किस पे आएगा। Dear friends,
I'm Dr. Sudhir Parikh, recipient of Padma Shri, chairman of Parikh Worldwide Media and TV channel called ITV Gold, chairman of the Center for Asthma and Allergy, and chairman of Life Global NGO. Really, it's my honor and privilege to remember my most favorite hero, Devanand Saab. Today we are remembering him on his 97th birthday anniversary. Devanand Saab was one of the kind, and he was a best out of all the heroes in early 70s, 60s, 70s when I was in the college. We all, myself and all my friends, they used to adore him so much because he was a great romantic hero. His songs were romantic songs were so good, so we still remember him. Not only he was a great successful superstar, but he's also a great human being, a very kind human being, and very knowledgeable human being. And I know him personally. I met him during his last visit to New York, New Jersey area, while during his launching of his autobiography. We spent whole evening with him. We discussed so many aspects of the Bollywood and Bollywood industries, and he always be very positive, very, very loving person, and really we miss him. And God bless him, God bless America, and God bless India. मेरा नाम मुस्तफ़ा अजमेरी है और मैं अटलांटा में रहता हूँ। देवानंद साहब मेरे फेवरेट हीरो है और मुझे उनसे 2 बार मिलने का मौका मिला हुआ है। पहली बार तो जब वो 1996 में अटलांटा आए हुए थे और ओलंपिक में उनका कुछ शूटिंग करना था। उसके बाद में उनको एक रिसेप्शन भी उनके लिए रखा गया था। तो मुझे जो रिसेप्शन ऑर्गेनाइज़ किया था वो हमारे सुभाष रजदान साहब ने मुझे मौका दिया कि उनसे होटल से पिक करके उनको हवेली में लाना है। तो और देव साहब की एक बुक थी, किताब उन्होंने निकाली थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था रोमांसिंग विथ लाइफ। तो उसका बुक साइनिंग का प्रोग्राम था। ये शाम को इवेंट ख़त्म होने के बाद एक टेबल पे हम लोगों ने डिनर भी किया। वो हमारे साथ ही हैं, उनकी फिल्मों के जरिए, उनके गानों के जरिए। ऐसी शख्सियत हमेशा अमर रहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू द वन एंड द ओनली देवानंद साहब। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को विजन ऑफ एशिया आप तक पहुंचाया जाता है ITV गोल्ड पर शाम 8 बजे। और एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का हम आपकी सेवा में लेकर आते हैं रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए फिर एक बार निवेदन, बने रहे हमारे साथ, होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। उत्साह के साथ में कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय हिंदू परंपरा में गणेश जी को विशेष रूप से आवाहित किया जाता है। उनका पूजन किसी कार्यक्रम के शुभ समापन के लिए अनिवार्य माना जाता है। उमिया धाम में गणेश जी की स्थापना से जुड़े हुए इस उत्सव की कुछ झांकियां मंगल कामनाओं के साथ प्रस्तुत हैं। Yeah.
માત કી જય, ઉમિયા ધામની જય. હું બળદેવભાઈ પટેલ, ઉમિયા માતાજી સંસ્થાના પ્રેસિડેન્ટ. અત્યારે COVID-19 છે, બહુ ઓછી સંખ્યામાં કોઈને આમંત્રણ આપ્યા સિવાય પણ આજે ગણપતિની સ્થાપના દિને એનું પૂજન, ગણપતિ પૂજન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં બધા ઘણા બધા માણસોએ ઉત્સાહપૂર્વક લાભ લીધો અને બધા ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. અને આવી રીતે પ્રસંગમાં બધા હાજરી આપી ઉત્સવને શોભાવતા રહેજો એવી બધાને હાર્દિક શુભકામના. ઓકે, ઉમિયા માત કી જય, ઉમિયા ધામની જય. Ganpati Bappa Moria. Today the Stapa din for the Ganpati Bappa Moria, and used in the temple behind the people, but limited people because of capacity and government of New Jersey state for the COVID-19. That's why not involving the all people and not invitation for the lot of people. That's why limited people. But you can see behind our temple doing a continuous program and everything, but limited people. You can visit anytime in the temple, and this is a temple for everybody, and please come and visit, and temple is open. Ganpati Bappa Moria. हम किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, हम अपने लिए जीते हैं या औरों के लिए जीते हैं, कितना निस्वार्थ भाव से हम सबकी सेवा करने के लिए समर्पित होते हैं, ये सब हमारे जाने के बाद भी याद रहता है. इसका परिचय वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में पुरुषोत्तम महीने के मुख्य मनोरथ के साथ साथ आयोजित हुई एक सभा में भी मिला, जहां पूर्व चेयरमैन समर्पित और आत्मीयता से मंदिर के उत्थान में सदा समर्पित रहे डॉक्टर अरविंद शाह को याद किया गया. प्रस्तुत है इस आयोजन की कुछ झलकियां. जय श्री कृष्णा. अशोक व्यास ITV गोल्ड के लिए वैष्णव टेम्पल से पुरुषोत्तम महीने में जो विशेष मनोरथ हो रहे हैं, उनमें से एक मनोरथ की झलकी आप तक पहुंचा रहा हूं. साथ ही साथ एक बरस पूरा हुआ एक ऐसे समर्पित, सेवाभावी, आत्मीय, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए डॉक्टर अरविंद शाह, जिन्होंने चेयरमैन के रूप में नेतृत्व प्रदान किया वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क को, उनकी अनुपस्थिति भी प्रेरित करती है. स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ आज उनको यहाँ याद भी किया जा रहा है. ये नॉर्थ अमेरिका की सर्वप्रथम पुष्टि मार्गीय हवेली जो 1988 में एस्टेब्लिश हुई. इस समय अधिक मास, जो कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, पिछले 8-10 दिन से उसका मनोरथ और उसका उल्लास हम लोग मना रहे हैं. પશુજીવ એટલે જેનું જીવન ધર્મ વગરનું છે. ધર્મો હિ દેશામલિકો વિશેષઃ ધર્મેણ હીના પશુભિઃ સમાનઃ. ધર્મ જ પશુ અને મનુષ્યને અલગ કરે છે. ખાવું, પીવું, સૂવું, ઊંઘવું, ભોગ કરવા તો પશુ પણ કરે છે અને આપણે પણ કરીએ છીએ. पुरुषोत्तम मास में वैसे तो सेवा, दान, दक्षिणा उसका बहुत ही बड़ा महत्व है. हम लोग करंट कोरोना गाइडलाइन, जो महामारी जो हम सब ने देखी है, उसमें न्यूयॉर्क गवर्नर गाइडलाइन वो सबको देखते हुए संभाल के 6 फीट डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन पूरा ख्याल रखते हुए मंदिर में वैष्णवों को शाम को 6 से 7 दर्शन की सुविधा दूसरी बात, आज संडे को हमारे जो प्रीवियस चेयरमैन बिलव्ड लेट डॉक्टर अरविंद भाई शाह, जो कि सितंबर 2019 में हमें छोड़ के गए, उनकी पुण्यतिथि का 1 साल हो गया. और आज यहाँ वैष्णव मंदिर के पास में वल्लभ हॉल में श्री अरविंद भाई शाह का प्रथम पुण्यतिथि का हम लोग शोकांजलि भी मना रहे हैं. तो सब वैष्णव इकट्ठा हुए हैं. उन्होंने मंदिर की पिछले 32+ सालों से बहुत सारी सेवा की है. आज भी हम लोग उनको बहुत सारा मिस करते हैं. पूरा वैष्णव परिवार यहाँ का मंदिर का, उन्होंने अपने तन मन धन से बहुत सेवा की हुई है. He also had this energy, almost like a positive black hole,
where people were drawn to him. And I'm sure that everybody on this call felt him, or felt that happen with them. It didn't matter what the person's race was, their age, their religion, their education. People just wanted to be around him. પવિત્ર દિવસે આપ સૌ જાણીએ છીએ કે છેલ્લા ઇન્સેપ્શન કે 32 વર્ષથી જે મહેનતથી આપણા લાડીલા ડૉક્ટર અરવિંદભાઈ શાહે પોતાના જીવનને અર્પિત કર્યું છે એની આજે શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે આપણે ભેગા થયા છીએ. After being successful in the field of medicine, Arvind decided to put his time and effort to social causes. The biggest beneficiaries were Gujarati Samaj of New York and Vaishnav Temple of New York. He could entertain everybody. There were programs after programs after programs. Ultimately what? To grow the congregation. That is the purpose, to grow the temple. I hope, that he's happy. I know he's happy because all throughout his life, even, at the end times, he had one picture and looking at Srinathji and just talking to him, praying to him. And that's something that I think of. And I think of the connection, the worship, and the devotion. He did all his work in his lifetime, whatever he was supposed to do. Nothing left. Finally he said, I have nothing left in my life to do. I have fulfilled all my wishes, all my work. And day before, that was September 14th, Jiraji Gavana photo mukelo, so he saw that photograph and he said like this, both the hands. He said, Sena mate wait kare che tu? I'm ready to come. Why you are waiting? Take me. On 14 he said, on 15 he passed away. So he was ready to go. और हम आज का विजन पेशा वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर आप हमारे फ्रेंड बने, साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और इवेंट्स के बारे में हमें लिखते रहें events@itvgold.com पर. कोविड-19 पूरी तरह से गया नहीं है. अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य हैं. बार बार हाथ धोने की हिदायत को याद रखना भी लाभकारी हो सकता है. आप स्वस्थ रहें, प्रगति करें. मंगल कामनाओं के साथ हमारा साथ देने के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हुए अशोक व्यास को अनुमति दें. नमस्कार.